So, hello everyone, and welcome to Career Launcher. So, I hope you all are aware that every Wednesday and Thursday at 9 p.m., we come up with this class where we actually discuss the GK quiz, or you can say static GK quiz through MCQs. And this is specifically for 2026, but yes, those who are attempting this year can also watch. Okay. And I have already done the initial 5 parts. I have already discussed the earlier 5 parts, which is available on the same YouTube channel. तो आप इसमें YouTube चैनल पे जाना, लाइव वाला सेक्शन उस पे जाना और नीचे जाना, you will get all those videos. ठीक है? So let's begin without wasting our time. So let's begin with the first question of the day. The question says, where is the headquarter of World Bank? Your options are New York, Washington DC, Paris, London. What is the right answer? Can anyone tell me? I'm waiting for the response. And can anyone tell me one more thing? That this World Bank actually is a result of which famous, I would say, conference? And that is also very important in the history. कोई बता सकता है anyone? So the right answer is yes. Shruti is right. The right answer is B, Washington DC. Okay. So this bank is a result of a very famous conference that's called as Bretton Woods Conference. Hai na? This happened in which year? Can anyone tell me? Bretton Woods Conference happened in which year? So it happened in 1944. Bretton Woods, you will find it in New Hampshire. Okay. And I want to ask one more thing. Since we are talking about World Bank, there is another organization which actually is called as IMF. This also was a result of the same Bretton Woods Conference. We call it as International Monetary Fund. International Monetary Fund. So can anyone tell me, this International Monetary Fund is headquartered in which city? जैसे World Bank you have answered B, Washington DC. Similarly, IMF, International Monetary Fund, is headquartered in which city? I'm waiting for the response. कोई बता सकता है? So actually the right answer is again B. So both IMF, International Monetary Fund, as well as World Bank is headquartered in Washington DC, USA. So B is the right answer. Yes, Navy, you are also right. Very good. Washington DC. So B is the right answer. Okay. Now we are having who is the president? Now we are having a new president. His name is Ajay Banga, an Indian origin president. Is the new president of World Bank. You should be knowing it. Now let's move. Let's see. Here is India. This is USA. So this is United States of America. यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज न्यूयॉर्क, और इसके बगल में यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी यू विल फाइंड. ठीक है, here you will find the headquarter of IMF as well as World Bank. ठीक है, Washington DC is also the capital of USA. I hope you are aware of that. Now let's move on to the next one. The question number 2. In February 2023, who among the following had succeeded Suzanne Wojcicki to become the new CEO of YouTube? Sundar Pichai, Eric Smith, Steve Wozniak, Neil Mohan. Now you will be thinking, sir, why are you asking today when this is a old news? But there is a reason why I'm asking. So there's a reason. Actually, it is linked with current affairs also. Okay. And that is why I'm asking. Yes, very good, TV. You are right. The right answer is D. Neil Mohan is the right answer to this question. ठीक है. Yes, Shruti, you are also right. D is the right answer. Actually हुआ क्या था कि जिनको रिप्लेस किया था ना, उनकी डेथ हो गई अभी रिसेंटली. She died. सुजान वोक्सिस्की की. ठीक है, अगर आप देखोगे 8 days ago उस वक्त आई मीन यू कैन से अगस्त वगैरह की बात होगी, आई थिंक अगस्त या सितंबर की. ठीक है, सुजान वोक्सिस्की, फॉर्मर CEO of YouTube, dies at 56. Okay,
So that is why it was in the news. Second thing is Neil Mohan is an Indian origin person, है ना? So that is why it becomes more important, because if there is an Indian is at a very good position, it automatically becomes important for you. Okay? Yes. Now let's move on to the next one. The next is question number 3. Which of the following is the president of Bangladesh? Your options are Muhammad Shahabuddin Shoppo, AHM Mustafa Kamal, Nurul Majid Mahmud Humayun, Asaduzzama Khan. What is the right answer to this question? प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश कौन है इसमें से? And I hope you are aware Bangladesh has been in the news because a prime minister of Bangladesh resigned. Yes, Nivi, Shruti, you are right. A is the right answer. Muhammad Shahabuddin Shukpo is the right answer. Now I have one more question. Recently, the prime minister of Bangladesh, I would say in August actually, resigned. So what is the name of the prime minister who resigned? And instead of the prime minister, now we are having a advisor, chief advisor to the government. And who is the chief advisor to the government? Yes, the prime minister who resigned is actually Sheikh Hasina. Very good, Nivi and Shruti, you both are right. In fact, I have made a detailed video on the same YouTube channel, है ना? Sheikh Hasina resigns करके, है ना? So Sheikh Hasina. Okay. Now the chief advisor is, yes, very good, Shruti and Nivi both have answered me correctly. The chief advisor is Muhammad Yunus. And Muhammad Yunus actually won Nobel Prize also. So he won Nobel Prize in which year? And in which category? And for what purpose? Nobel Prize कौन से category मिला? मतलब peace, economics, physics, chemistry, physiology, medicine, literature, what? And in which year? Yes, Nivi is right. 2006 में मिला. And Shruti is right about the category. It's not economics. Actually, he got in peace. Okay, so Nobel Peace Prize मिला, not Nobel Prize in economics. Although his work is actually the economics field. So what is his work? Yes, for Grameen Bank. Very good, Nivi. So A is the right answer. First of all, let me show. Here is India. This is Bangladesh. The capital of Bangladesh is Dhaka. And what is the currency, by the way? Currency क्या है बांग्लादेश की? Anyone? The currency is Taka. तो पता होना चाहिए, ठीक है ना? So Bengali, English, ना Bangladeshi. Muhammad Shahabuddin Shukpo is the president. Muhammad Yunus is the chief advisor. And yes, recently we have seen a new chief justice also, Syed Rafat Ahmad. So ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है? Because these were in the news. Bangladesh was very much in the news. Yes. Yes, Shruti, you are right. Taka is the currency of Bangladesh. Very good. ठीक है? So Muhammad Yunus is the fifth chief advisor of the interim government, है ना? Since August 2024. He won Nobel Peace Prize, ठीक है? In 2006. But जो उनका काम है वो इकोनॉमिक्स की फील्ड में for Grameen Bank, but he got Nobel Peace Prize, not Nobel Prize in economics. ये बहुत छोटी सी बात है, but this can be asked in the examination. Grameen Bank is actually the purpose was micro credit and micro financing. मतलब बहुत छोटे लेवल पर लोन देना, giving loans to very poor people, है ना? या MSMEs जिसको कहते हैं इंडिया में, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, या स्मॉल स्ट्रीट वेंडर्स, एकदम छोटे लेवल पे गरीब लोगों को लोन देना. दैट्स द आइडिया ऑफ माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंसिंग. एंड दिस कॉन्सेप्ट एक्चुअली he established, that is called as Grameen Bank. Okay, yes. Now the next is, what does DC stands for in Washington DC? Washington DC में DC का क्या मतलब होता है? The capital of US, है ना? बताइए. ये तो आसान है, पता होना चाहिए. The right answer is D. Yes, Nivi, you are right. District of Columbia. D is the right answer, है ना? So Washington DC, District of Columbia, formerly called as District of Columbia, है ना? DC, capital of USA.
ठीक है, और ये कौन सा रिवर पर है, ये भी कभी कभी पूछा था, पोटोमैक रिवर, ठीक है। यस, सो डी इज द राइट आंसर, जस्ट हैव एन आइडिया। सो हियर इज यूएस, यहाँ पर ईस्ट कोस्ट में ये न्यूयॉर्क मिला, यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है। अच्छा, न्यूयॉर्क में एक बहुत फेमस रिवर है, उसका नाम बता सकते हो कोई? जैसे वॉशिंगटन में जो रिवर है उसका नाम है पोटोमैक रिवर। न्यूयॉर्क में रिवर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर इन न्यूयॉर्क? यस निवी, वेरी गुड, हडसन रिवर। एक्चुअली क्या हुआ था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट ईयर, बट आई थिंक मोर देन 10 years बैक एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें रिवर पर फ्लाइट उतार दिया गया था। आई थिंक देयर इज अ फिल्म आल्सो ऑन दैट, तो दैट वाज हडसन रिवर एक्चुअली। उसमें एक एरोप्लेन थी, उसमें कुछ इश्यूज था, तो लैंड नहीं कर पा रही थी, मतलब एयरपोर्ट पर। सो the pilot actually landed in the river, and fortunately everyone survived. So that is on Hudson River. It's also very famous and all. The next is, who is the current prime minister of Israel, because this has been very much in the news. And please tell me the president of Israel also. Yes, prime minister. Yes, Nivi and Shruti, you both are right. Benjamin Netanyahu is actually the prime minister of Israel. एंड प्रेसिडेंट का नाम क्या है? यस नीवी, आपने हाफ नेम बताया है, यू आर राइट, एक्चुअली आइजैक हर्जोग है, इस तरह करके स्पेलिंग है हर्जोग, ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग, है ना। बेंजामिन नेतन्याहू, ही assumed the charge on 29 December 2022. Now let's move on to the next one. What does the letter P denotes in the term PAN? आपने पैन कार्ड वगैरह नाम सुना होगा, which is made by the income tax department. So उसमें P का क्या मतलब होता है? प्रोविजनल, प्राइवेट, पर्सनल, परमानेंट। व्हाट इज द राइट आंसर? हाँ, आइजैक हर्जोग था। यस श्रुति, यू वर राइट, द प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल इज आइजैक हर्जोग। ये पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? पैन का फुल फॉर्म क्या होता है ना, परमानेंट अकाउंट नंबर। सो डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, तो पता होना चाहिए, यू शुड बी नोइंग इट। यस maybe श्रुति, यू बोथ राइट, डी इज द राइट आंसर, है ना। 10 डिजिट का नंबर होता है, उसमें नंबर भी होता है, कुछ अल्फाबेट्स भी होते हैं ना, अल्फा न्यूमेरिक। Now the next is question number 7. How many members were nationalized in July 1969? How many banks, Hannah, when the first nationalization took place? 5, 8, 10, 14. अच्छा, नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलाइजेशन? owned by government. Yes, nationalization मतलब होता है it is transferred from private company to the government company. Yes Navy, you are right. And how many banks have been nationalized till now? Yes Shruti, you are right. In 1969 it was, 14 banks were nationalized. और उसके बाद एक बार और nationalization हुआ था 1980 में. So at that time how many banks were nationalized? उस वक्त कितने banks nationalized हुए थे? 1969 में इंदिरा गांधी was there, the prime minister of India. ठीक है। सिमिलरली इवन 1980 में इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो 1980 में हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड? सो द राइट आंसर इज, बताइए, उस टाइम पर 6 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1980 और 1969 में 14। ये दोनों याद रखिएगा नंबर, बिकॉज दीज आर आस्क्ड इन द एग्जाम्स जनरली। यस नीवी एंड श्रुति, यू बोथ आर राइट, 6 इज द राइट आंसर, ठीक है। Okay, the next one is question number 8, which talks about this. Fiscal policy is concerned with which of the following? Export, import, public revenue and expenditure, issue of currency, population control. What is the right answer? Yes, Nevi, you're right. What about others? और लोग भी ट्राई कीजिए। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, फिस्कल मतलब ही होता है फाइनेंशियल, है ना।
Yes, Shruti, you both are right. Fiscal policy or financial policy means public revenue and expenditure, in government revenue and the government expenditure, which you must have heard when budget is presented. बजट में वही होता है ना, उसी का तो सारा होता है ना. So everything actually, when a budget is presented by the finance minister tells about the government expenditure and revenue for the upcoming fiscal year. ठीक है. So that's the B is the right answer. In fact, I have made a separate video on it. Please go and watch it if you have not watched. आप जैसे YouTube पे सर्च कीजिएगा बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे 2024 लॉ एंट्रेंस, ऐसे सर्च कीजिएगा, you will get this video. Okay, where I have discussed about the budget and economic survey that was presented in the month of July. ठीक है. Okay, let's move on to the next one. Which of the following is the world's largest gold consumer? सबसे ज्यादा गोल्ड कौन सी कंट्री कंज्यूम करती है? इंडिया, चाइना, यूएस, ब्राजील. अच्छा, को पता है गोल्ड इंपोर्ट इज कंसिडर्ड एज बैड फॉर इकोनॉमी? यू नो दिस? Gold import is considered as bad for economy because it leads to reduction in forex, है ना? और yes, the right answer is China. B is the right answer. Yes, Shruti, you're right. B is the right answer. Maybe you're right. B is the right answer. China is the largest importer. China is the largest consumer of gold. Earlier it was India. Now the next is, what do you mean by white label ATM? Will export and import be counted in balance of trade? Yes, Ayush, that is what is counted in balance of trade. Balance of trade में export ही import count होता है. Yes. White label ATM किसको कहते हैं? देखो, इसमें ना कभी कभी ना ऑप्शन एलिमिनेशन आपको सीखना चाहिए. ऑप्शन एलिमिनेशन वी कॉल. कुछ कुछ वो सिली टाइप के ऑप्शंस होते हैं, जैसे लिखा हुआ एटीएम्स विच आर व्हाइट इन कलर, तो उसको व्हाइट लेबल एटीएम कहेंगे. इसका कोई इतना सेंस बन रहा है? मतलब उसका कोई टर्म है जैसे व्हाइट लेबल एटीएम, तो कुछ उसका मतलब मीनिंग बनता होगा ना, इसलिए कि व्हाइट कलर का इसलिए व्हाइट लेबल एटीएम कहते हैं. इट हैज वेरी लेस मीनिंग. एटीएम्स विच आर सेट अप बाय आरबीआई, ये भी उतना कुछ खास सेंस नहीं बन रहा है, बट एक्चुअली एटीएम जो पूरा सिस्टम होता है वो एनपीसीआई के अंडर में होता है ना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रेगुलेट्स ऑल दोस विच आर इनडायरेक्टली अंडर आरबीआई. बट यहाँ पे जो मेन आंसर है वह है एटीएम्स विच आर सेट अप बाय नॉन बैंकिंग एंटिटीज. ठीक है, सो द राइट आंसर इज ए, नॉन बैंकिंग एंटिटीज. जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है, लेट मी एक्सप्लेन, इसको कहते हैं एनबीएफसी. आपने सुना है कभी? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, गो एंड रीड इट. एनबीएफसीज क्या होता है? सो ए इज द राइट आंसर. ठीक है, नाउ ठीक है, तो आप देख सकते हो व्हाइट लेबल एटीएम कहते हैं, ऑथराइज्ड बाय आरबीआई अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007. नाउ द नेक्स्ट वन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी रेगुलेट्स आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक? अच्छा, आरआरबी का क्या काम होता है पता है? Actually, this bank is specifically set up to promote giving loans in agriculture sector, in rural areas. गांव के एरिया में खास के एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन देने के लिए आरआरबी सेटअप किया गया. नाउ द रीजन इज वेरी सिंपल. देखो, जनरली क्या होता है कि द प्राइवेट बैंक्स विल नॉट गिव लोन्स इन जनरल टू द पुअर फार्मर्स, बिकॉज प्राइवेट बैंक्स तो जाहिर सी बात है, ऑफ कोर्स, है ना, जनरली स्पीकिंग, बिकॉज एंड दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट सेट अप दीज आरआरबीज, है ना, टू एंश्योर दीज थिंग्स. एंड दिस एक्चुअली वर्क्स अंडर नाबार्ड. बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. नाबार्ड का मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. इसका फुल फॉर्म मैं दिखाता हूं, है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. ठीक है, और आरआरबी भी जो होता है रीजनल रूरल बैंक, इसमें भी टर्म रूरल है
इसमें भी टर्म रूरल है, और मैंने बताया आरआरबीज आर कंसर्न अबाउट एग्रीकल्चरल एंड ऑल, है ना. सो नाबार्ड के अंडर में काम करती है. ओके, सो दिस यू शुड बी नोइंग इट. दिस वाज सेट अप इन 1982. सो आई वुड से प्लीज रीड समथिंग अबाउट नाबार्ड, थोड़ा सा पढ़िएगा, because I have seen in many exams question being asked from NABARD. So now let's move on to the next one. RRB is more effective than self help group. देखो RRB तो एक established institution है ना, बजाता. SHGs तो मतलब जो होता है एक तरह से लेस इंस्टीट्यूशनलाइज होता है. RRB तो एक इंस्टीट्यूशनलाइज है ना, मोर. हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप कई बार नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज होता है. सब कुछ लोग आए, ग्रुप जमा हुए और फिर जो है आपस में पोलिंग ऑफ रिसोर्स किया, फिर लोन ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़े लेवल पे होगा. हाँ हाँ, ऑफ कोर्स. ठीक है. नाउ द कांसेप्ट ऑफ डुअल इकोनॉमी इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट? बताइए. The right answer is traditional agriculture sector, modern industrial sector. So A is the right answer to this question. मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो ट्रेडिशनल है और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है मॉडर्न है. इसको इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाना, जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. लेस डेवलप कंट्री है ना. यस, नेवी यू आर राइट. हाँ, लेस डेवलप कंट्री में मिलेगा, है ना, चाहे बहुत सारे, है ना. तो बेसिकली आइडिया जो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होती है तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर तो ट्रेडिशन ही रहता है ना, है ना. तो दैट इज आइडिया और मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर. यानी इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज में इंप्रूवमेंट आया है, लेकिन अभी एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी ट्रेडिशनल है. सो दैट्स द आइडिया ऑफ डुअल इकोनॉमी. ठीक है. सो ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज लोकेटेड एट मुंबई, न्यू दिल्ली, मद्रास, कोलकाता और कलकत्ता. एंड इन विच ईयर इट वाज एस्टैब्लिश्ड? कब एस्टैब्लिश हुआ था? यस, सैफी नोमानी, वेरी गुड. ए इज द राइट आंसर. और एक दो चीज और बताइए, बिकॉज इससे मैंने एक आध क्वेश्चन देखा है किसी एग्जाम में आते हुए, MHCT में या किसी स्लैट में पूछा था. यस, स्नीवी एंड सैफी नोमानी, यू बोथ आर राइट. ए इज द राइट आंसर, मुंबई. देखो थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना, जितने भी फाइनेंशियल रिलेटेड चीज है ना, उसमें चांसेस ज्यादा है कि हेडक्वार्टर मुंबई हो. आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज इट इज द केस. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए RBI का हेडक्वार्टर, तो भी यही है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सब यही मिलेगा आपको. जितने भी स्टॉक मार्केट्स, दलाल स्ट्रीट है ना, मिंट स्ट्रीट, यू विल फाइंड इट हियर. और आई होप यू आर अवेयर मुंबई इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द इंडिया एंड ऑल. ठीक है, तो चांसेस ज्यादा होता है. तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब स्टैब्लिश हुआ, इन विच ईयर, और इसका इंडेक्स क्या है? यस, किसी ने बताया भी. वेरी गुड सैफी नोमानी, यू आर राइट. इंडेक्स जो इसका है निफ्टी 50. ठीक है. और कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? (92) के आसपास, है ना. ठीक है. नाउ आई हैव वन मोर क्वेश्चन बिकॉज दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट. तो इफ आई एम आस्किंग एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, तो क्या आंसर करोगे? Then what should be the answer? Yes, very good. Navy and Safi Nomani, both are right. Bombay Stock Exchange कब खुला था? When it was established? In which year? Yes. Shruti, you are also right. Safi Nomani, you are right. हाँ, 1875. Very good, Safi Nomani. 1875. And इसका what is the index of Bombay Stock Exchange? Sensex. Good, Safi Nomani. Very good. Shruti, you are also right. 1875. ठीक है. तो ये सब बेसिक चीजें. तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में यू शुड बी नोइंग, बेस्ड इन मुंबई, है ना. 1992 में स्टैब्लिश हुआ. सिमिलरली निफ्टी 50 इसका ये है इंडेक्स.
है ना, एंड सिमिलरली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना, दलाल स्ट्रीट में लोकेटेड है, एस्टैब्लिश इन 1875, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन। अच्छा, इसमें एक दो चीज पूछना है। जो सेंसेक्स है, इसमें कितनी कंपनीज को, हाउ मेनी कंपनीज आर टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सेंसेक्स, एंड हाउ मेनी कंपनीज व्हाइल कैलकुलेटिंग निफ्टी? सेंसेक्स 30, यस नीवी यू आर राइट। सैफी नोमानी 50 किसके लिए? निफ्टी 50 तो आपको पता होगा, 50 से पता चल जाएगा 50 कंपनीज। ठीक है, सेंसेक्स के लिए 30, यस नीवी इज राइट, वेरी गुड। हाँ, okay, the next question is open market operation refers to what? हाँ 30 50, yes right, हाँ purchase sale of, yes very good Navy, you are right, to control inflation rates, very good, fantastic Shruti, you are also right, purchase and sale of government security by RBI, तो उसको हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक दो और होमवर्क है, मैं आपको कह रहा हूं पढ़ने के लिए, LAF पढ़िएगा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये क्या होता है? एडजस्टमेंट facility, go and read about it. It is something related with repo rate and all. That is what you should be knowing. Yes, Shruti, Safi, Nomani, Nivi, you all were right. B is the right answer to this question. The financial year in the Indian economy runs from when to when? कब से कब तक? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, होपफुली। यस सैफी नौमानी, नीवी, श्रुति, यू आर राइट। 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, इसको फिस्कल ईयर कहते हैं ना, या फाइनेंशियल ईयर। जैसे इफ आई राइट FY 2023-24, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि दिस फिस्कल ईयर स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 2023 and ended on 31 March 2024। ये मतलब हुआ ना। अच्छा एक चीज और आई वांट टू आस्क, इसमें ना क्वार्टर्स होते हैं फिस्कल ईयर्स में। सो हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर? सो क्वार्टर्स का मतलब ये होगा 4 हिस्सा, है ना। सो Q1, Q2, Q3 एंड Q4। ठीक है, तो इफ आई एम आस्किंग कि Q1 में कौन कौन मंथ्स आते हैं, तो आसान है, होपफुली यू कैन आंसर। अप्रैल मई जून, यस वेरी गुड। हाँ देखो, हर क्वार्टर में 3-3 महीना होगा, 3+3+3+3, सो दिस विल बी अप्रैल, मई एंड जून। देन वी हैव जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो ये सिंपल है ना। सो क्वार्टर्स कई बार न्यूज़पेपर में ऐसे लिखा रहता है, जैसे ऐसे लिखा रहेगा समटाइम्स, Q1 ऑफ FY 23-24। ठीक है, तो अब समझ जाना Q1 की बात हो रही है। सिमिलरली ऐसे लिखा रहेगा Q4 ऑफ FY 2021-22, लाइक दिस दे डू राइट। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। सो डू यू हैव एनी क्वेश्चन? कोई सवाल है आपका? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। सो विल बी हैविंग दिस क्लास ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे एट 9 PM। ठीक है, ये बस ख्याल रखिएगा ऑन दिस स्टैटिक जीके सेशन। ओके, सो एक और स्टैटिक जीके सेशन हम लोग लेते हैं संडे को 8 PM पर। दिस ऑल्सो यू कैन वॉच ऑल्सो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज
इन कमिंग मंथ्स विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ कंटेंट, और भी कंटेंट आने वाले हैं. सो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. So this is all about today's class. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.